Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Welcome to this Wednesday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब अंग्रेजी में हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं Arjun Chaudhary. Erasing all its early gains, Sensex loses 25 points but Nifty gains 1 point. Rupee strengthens 10 paise against the US dollar. In corporate results, Infosys reports 16.8% growth in its quarterly consolidated net profit. Wipro's consolidated net profit jumps 20.8% and 72.5 lakh farmers benefit so far with minimum support price value of over 1 lakh and 2,000 crore rupees in the Kharif crop procurement season. सारी शुरुआती तेजी गंवाते हुए सेंसेक्स 25 अंक गिरकर हुआ बंद। हालांकि निफ्टी में 1 अंक की बढ़त दर्ज हुई। रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे की मजबूती में रहा। कंपनी परिणामों में इन्फोसिस के संकलित तिमाही शुद्ध लाभ में 16.8% की वृद्धि हुई। विप्रो का संकलित शुद्ध लाभ 20.8% के उछाल में रहा और मौजूदा खरीफ विपणन मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा 1,02,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में अब तक लगभग 72.5 लाख किसानों को फायदा हुआ है। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। शेयर बाजारों में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स सारी शुरुआती बढ़त गंवाते हुए 25 अंकों का मामूली नुकसान दर्ज करता हुआ 49,492 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1 अंक की बढ़त से 14,565 पर बंद हुआ, जो निफ्टी का अब तक का उच्चतम स्तर है। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.6% की गिरावट में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% के नुकसान पर बंद हुआ। At the stock markets, erasing all its early gains, the Sensex at the Bombay Stock Exchange ended with a marginal loss of 25 points to end at 49,492 today. But the Nifty at the National Stock Exchange gained 1 point to 14,565. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index fell 0.6% while the Small Cap Index shed 0.4%. Market breadth on the BSE was negative with 3 losers for every 2 gainers. Among sectoral indices, the telecom index was the biggest gainer, rising 1.3%. Auto index climbed 0.8%. Oil and gas index added 0.7%. Bankex rose 0.6%. And IT, tech and the power index moved up 0.5% each. But the consumer durables index fell 1%. Healthcare index dropped 0.8% and the finance index shed 0.5%. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत हुआ और $1 की कीमत 73 रुपए 15 पैसे दर्ज हुई। Well, let's have a look at the corporate results from the IT space. Infosys has reported a 16.8% year-on-year rise in consolidated net profit at 5,215 crore rupees for the third quarter of this fiscal. Gross revenue for the quarter rose 12.3% year-on-year to 25,927 crore rupees. The company also raised revenue guidance band to 4.5 to 5% and earning margin to 24 to 24.5% on the back of continued strong performance. The board also awarded stock units worth 3.25 crore rupees to Salil Parekh and other shares worth 1.75 crore rupees to one unnamed key management professional. IT major Wipro has reported a 20.8% year-on-year growth in its consolidated net profit at 2,967 crore rupees for the third quarter of this fiscal. The Bengaluru-based company's consolidated revenue rose 1.3% to 15,670 crore rupees in the same quarter. The board of directors of the company approved an interim dividend of 1 rupee per equity share of par value of 2 rupees each, which will be paid on or before February the 2nd. And on this, we are joined by Jayanto Das, business analyst. Jayanto, very warm welcome to you on Market Mantra. Thank you very much, Arjun.
Jayanto, we read the market story along with corporate results from the IT space, Infosys and Wipro. And more importantly, apart from the net profit results for the third quarter, is a revenue guidance. If you look at the constant exchange rate between the rupee and the dollar, the background story really is that the company, for Infosys, has added 4 clients in the $10 million plus band, 16 clients in the $1 million plus band, and the total active client base is 1,562 by the end of December 2020. Now, how is it that the IT companies have managed to forge these deals in the middle of the pandemic? That is a key question. How is it that these IT companies have done so well and they are set to do even better in the future? Well, it has been our long-standing view, specifically in the last 4 to 6 weeks, if you consistently follow the news, where we have said both the IT industry and the pharma, these are the 2 sectors which have been, in that sense, the fundamental bedrock of the Sensex, are not crashing further if you look at those March and April initial days. And taking a cue from there, globally, most IT companies have been a forward-looking view in the sense for 2 reasons. One is because of the pandemic, while frontline businesses have suffered, these companies at the back end have been continuously providing support, and people have fallen back to IT in various sectors which had a human interface to a great extent. So post-pandemic, or even why post-pandemic, during the pandemic itself, most big corporates have been trying to transition quite effectively from, minimizing a human interface in whatever work they have been doing. If I set a very basic example, Arjun, over here, is our physical conference room meetings have been transformed to, over the web. And that's just a start. Now, across, companies, and you're speaking of 1,500 plus companies which Infosys has as of now, and it's 4 large acquisitions in the 10 million plus band. These are all reflective of what has happened in the pandemic in terms of, changeover, in terms of transition from a human interface to bring in a more IT-enabled sort of a service available. And I think that's where these IT companies have stood out remarkably well in terms of performance. In terms of a future revenue growth prospect, I do believe as an investor, IT and all still would be a safe bet, although you may not have a remarkable return compared to, say, other sectors like maybe pharma, for example, or maybe the banking sector, which is, in that sense, forecasted to have a much more better deliverables, but certainly a much more consistent and a very safe bet continues to be the IT sector at this point of time. जयंतु, आज जो इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जो कह रहे हैं कि मल्टी ईयर हाईज हैं, इवन टीसीएस के जो रिजल्ट्स आए थे वो भी 9 इयर्स का बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट बताया जा रहा था. सो आपको क्या लगता है कि जो हम सेंसेक्स में तेजी देख रहे हैं, पिछले कुछ 10 हफ्तों से लगातार तेजी देख रहे हैं, रिकॉर्ड हाईज पर है सेंसेक्स, निफ्टी, इनफैक्ट आज भी निफ्टी 1 अंक की बढ़त के साथ रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा है. सो आपको लगता है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा इस रिजल्ट सीजन में? आज इनफैक्ट जो रिजल्ट्स आए इन्फोसिस और विप्रो के, वो मार्केट बंद होने के बाद आए. सो आप पूरे रिजल्ट सीजन से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? आपको लगता है एक और बूस्ट मिलेगा एक ऑलरेडी बुलिश बाजार को? देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक रिजल्ट्स आई बिलीव, सोनू, इसमें बेशक जैसा हम उम्मीद कर रहे थे शायद उम्मीद से बेहतर ही आए, जैसे आपने कहा. खास करके 1 सेकंड में बता रहूंगा, आईटी क्षेत्र हो गया, फार्मा क्षेत्र हो गया, लेकिन ओवरऑल रैली पिछले 8-10 हफ्ते से ब्रॉड बेस रहा, तो कोई एक क्षेत्र स्पेसिफिक रैली नहीं हुए. लेकिन साथ में रिजल्ट सीजन में इस तरह का जब आंकड़े आते हैं नतीजे के रूप से, तो स्टॉक मार्केट में एक उछाल से ज्यादा ये जो उछाल इस वक्त जो हो रहा है, जहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियोज भी काफी स्ट्रेस्ड है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक फाउंडेशनल सपोर्ट मिलता है. और जहाँ पे जो करेक्शंस जो है, बेशक मार्केट में करेक्शंस हमेशा होता है और इस वक्त भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि करेक्शन नहीं होगा, लेकिन गिरने का जो अलग से एक लो डाउन होता है उसमें थ्रेशोल्ड में काफी तेजी बढ़ते हैं. और मैं मानता हूं कि इस तरह का बेलवेदर स्टॉक्स जो पहले होता था, और आज का तारीख में भी इन्फोसिस आईटी क्षेत्र में बेलवेदर स्टॉक माना जाता है, तो इस तरह का परफॉर्मेंस के साथ साथ इस स्टॉक के ऊपर, और सिर्फ स्टॉक नहीं, इस क्षेत्र के ऊपर अलग से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. और बेशक जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल में भी स्टॉक्स में एक ब्रॉड बेस रैली लगातार पिछले 8-10 हफ्ते से चल रहा है, लेकिन इस तरह का स्पार्कलिंग परफॉर्मेंस के द्वारा कुछ क्षेत्र में
जो अलग से मजबूती आता है, जहां पे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो स्ट्रेस होने का बावजूद भी मैं मानता हूं इसमें रुचि बेशक निवेशक का लगातार बेहतर रहेंगे, खास करके पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने अर्जुन को कहा रहा था कि एक जो ह्यूमन इंटरफेस से शिफ्ट करके जो ट्रांजिशन स्टेज में जो जा रहा है, जिस वजह से आईटी सेक्टर के इस तरह का ग्रोथ हम लोग अलग से देख पा रहे हैं। एक और चीज अगर आप देखें, कॉस्ट सेविंग भी आईटी क्षेत्र में काफी ज्यादा हुआ है, जहां पे आपने पेपर में भी पढ़े होंगे, ज्यादातर कंपनी जो इंडिया में बेस्ड है वो सारे वर्क फ्रॉम होम में शिफ्ट हुए हैं, और इसमें भी मैं मानता हूँ एक कॉस्ट सेविंग काफी उन कंपनीज में थोड़ा बहुत बेशक हुआ है। आई मीन अपार्ट फ्रॉम द रेवेन्यू इंक्रीज through new business acquisition. Jayanto, there has been a contrarian performance in the market today. Obviously, there has been correction, especially when it comes to the pharmaceutical and the realty indices today in the market. We saw the PSU bank, public sector undertaking banks, go up by 3%. What are the expectations from this index? The experts have said that the NPAs have come down. What about their net interest income? And what is the budget likely to announce as far as the PSU bank space is concerned? See, there is no two opinions about more fund infusion which is going to be given to the PSU bank sector. And the finance minister has time and again spoken of capital adequacy norms, has spoken of fund infusion, as well as, if not direct fund infusion from the government, at least they will allow most of the PSU banks to go back to the markets through a right issue or through some other issues, trying to shore up their funds at this point of time. So it's a work in motion, which is going to happen in the forthcoming fiscal also. Speaking of the PSU bank space, I do believe there will be more consolidation happening for sure next fiscal, and that maybe we get to know of it in the budget speech itself. But overall, I am very bullish from the PSU banking sector. And yes, NPAs still remain a concern in terms of managing of NPAs by some of the banks on the lower side. But the top performing PSU banks, I'm extremely bullish in terms of the performance, in terms of the growth from here on. And that's why the overall investor appetite would remain strong in terms of, the PSU banks as a whole bunch of stocks. जयंतु, अगर हम मैक्रोस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट कल फिगर्स आए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिसंबर में 4.6% हो गया। 9 महीने के बाद आरबीआई के कंफर्ट जोन में वापस आया है। 6% से ऊपर ही चल रहा था। और लेकिन आईआईपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है नवंबर में, फिर से कॉन्ट्रैक्शन में वापस लौट गया है। सो इस स्थिति में जहां इन्फ्लेशन में कुछ राहत है लेकिन ग्रोथ के फिगर्स स्ट्रेस्ड है, आरबीआई से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि फरवरी में बजट आने वाला है और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाली है। बिल्कुल। सोनू, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस वक्त आपने जो मुद्रास्फीति की बात की है उसमें गिरावट या नरमी जो थोड़ा बहुत आरबीआई की उम्मीद का, आरबीआई का बैंक का तरफ जो सीमित हुआ है, उसका प्रधान वजह यह है कि एसेंशियल कमोडिटीज और साथ में वेजिटेबल प्राइसेस का खास करके दिसंबर का महीने में एक नरमी आया हुआ है। ये कहते हुए ये भी एक बात सच है कि ग्रोथ कॉन्ट्रैक्शन फिलहाल जारी है, लेकिन एक बात हम लोग को ये भी कहना चाहिए कि दूसरी तिमाही में, आंकड़े अभी बहुत जल्दी आने वाला है, दूसरी तिमाही में या तीसरी तिमाही का भी अगर आप बात करें, हम लोग चौथा तिमाही में वी आर अबाउट टू एंटर, जिस तरह का नेगेटिव ग्रोथ हम उम्मीद कर रहे थे उसमें रिकवरी काफी ज्यादा हुआ है। नेगेटिव ग्रोथ तो बेशक हुआ है लेकिन रिकवरी काफी ज्यादा हुआ है कोविड का दौरान। तो ये सारे आंकड़े मिलके मैं मानता हूं कि आरबीआई ओवरऑल अपना कंसिस्टेंट पॉलिसी जो है वो बिल्कुल जारी रखेंगे इस वक्त। और उससे भी पहले मैं मानता हूं कि बजट का जो दिशा रहेगा कि पोस्ट कोविड, यानी कि ऐसा नहीं कि कोविड खत्म हो गया, लेकिन एक अलग से वैक्सीन का शुरुआत हुआ है और करीबन अप्रैल या मई में जाके हमें पता चलेगा कि वैक्सीन का ग्राउंड सक्सेस कितना ज्यादा या कितना कम हो पाए। लेकिन एक गवर्नमेंट का पास ये एक जो साल निकला है करीबन, जहां पे 5 से 6 महीना लोग लॉकडाउन के दौरान अलग अलग इंडस्ट्री में काम नहीं हो पाया, तो इसमें सरकार का तरफ से एक पोस्ट कोविड का जो अगले साल जो वित्तीय साल रहेगा उसमें हमें देखना या समझना पड़ेगा कि बजट का क्या निर्णय रहता है और इसमें एक ओवरऑल ग्रोथ को, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि ग्रोथ का कॉन्ट्रैक्शन अभी भी जारी है, उसको किस तरह से उछाल लेके आ सकते हैं, उसको एक देखना पड़ेगा। लेकिन एज आई सेड, ये एक न्यू वर्ल्ड रहेगा हम सबके लिए, जहां पे कोविड भी रहेंगे, वैक्सीन भी रहेगा
और साथ में देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का बजट प्रेस्क्रिप्शन कैसे रहा है, ये दोनों चीज का एक साथ सामना करने का. Very briefly, Jayanto, do you think that the factory output, which contracted by 1.9% for December, will actually go up with what you said, the vaccine manufacture and its distribution? Along with that, there's also news about the Make in India initiative, which is directed towards the auto sector, especially electric vehicles. Now we have Tesla also setting up an affiliate in Bengaluru, Karnataka. Do you see the factory output macroeconomically improve? Well, absolutely, there is no doubt, because given the present state of figures, things can only move on up higher at this point of time. What it needs is huge support from the banking sector to enable this move, and a huge support from the policy sector, policy measures, not policy sector, policy measures, to once again create that environment and ambience. Now, the government is in no two mood, and they have very, very clearly said, if you follow the previous budgets, and they have said in clear terms, they want to make India the electric vehicle hub. Now, China is already way ahead in this, and obviously we have to pick up our pace in terms of what China is doing, what we are doing. But I am quite optimistic, because China right now is once again going through another huge churn of issues, of policies, of how to tackle, privatization. You have seen what has happened to both Alibaba and Ant Group. And not only India, I think the whole world is closely watching in terms of how effectively, China is able to handle all these measures. So I think for India, creating the electric vehicle hub is a very important milestone for the overall Indian economic growth. And I do believe where, if you talk of the green revolution, the white revolution of the late 70s and all, the way it took India to at least a higher level of economic growth path, this electric vehicle revolution is the other thing. Not only in terms of creating of manufacturing bases or creating of markets, but also in terms of saving energy, which at this point of time is a huge drain on the Indian exchequer. चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का रुख कर लेते हैं. एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा. अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को दिया जा रहा नीतिगत समर्थन बने रहने की आशाओं के बल पर निवेशकों की धारणा को बढ़ावा मिला. जापान का निक्केई 1% की वृद्धि में रहा. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.7% की बढ़त पर बंद हुआ और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ. लेकिन मुनाफा वसूली के चलते चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.3% के नुकसान में रहा और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.2% की गिरावट दर्ज हुई. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी और जर्मनी का डैक्स प्रत्येक 0.1% की बढ़त पर थे. फ्रांस का कैक 0.4% की वृद्धि पर था. आर्थिक खबरों में फ्रांस के केंद्रीय बैंक ने आज कहा कि पिछले वर्ष की अंतिम तिमाही में फ्रांस की अर्थव्यवस्था में संभावित रूप से 4% की सिकुड़न दर्ज हुई. चौथी तिमाही के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ फ्रांस ने कहा कि वे अपने पुराने अनुमान पर ही बने हुए हैं, जिसके मुताबिक पिछले वर्ष यूरो क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 9% की गिरावट दर्ज हुई है. Moving on to the U.S. Market on Wall Street, the key indices ended marginally higher yesterday in a volatile session as investors waited for earnings season and monitored developments in Washington after supporters of outgoing U.S. President Donald Trump stormed the Capitol. So the Dow Jones Industrial Average rose 60 points, 0.2% to close at 31,069. The S&P 500 gained 2 points to end at 3,801. And the Nasdaq Composite added 36 points to 13,072. The small cap Russell 2000 index gained about 1.4%. Shares of U.S. automaker General Motors shot up 6% to hit the highest in a decade after the company outlined plans for its first electric commercial vans to be delivered to FedEx Corporation by year-end. Shares of Tesla jumped over 5% on the confirmed news that the electric car maker moved a step closer to its launch in India later this year by registering a company in the country. Meanwhile, earnings for S&P 500 companies are now expected to show a decline of 9.5% year-on-year in the final quarter of 2020, according to IBES data from Refinitiv. Jayanto, we had discussed in the afternoon also that the U.S. Congress resolution by which Joe Biden will now be inaugurated as the U.S. President and the preservation of democracy. Is that been a major impetus as far as the U.S. markets are concerned? And once again, the electric vehicle story is all coming out from the U.S. and into the Indian market as well. So just give us your views briefly.
Well, the Biden story obviously would have a very positive impact, not only in India, but also in terms of how it pans in terms of geopolitical structure globally. So I guess that's a win-win situation both for the U.S. stock markets as well as international stock markets, which take their cue from how U.S. stock markets are doing or moving. So that's one part of the fact. Now coming to the electric vehicle thing, Tesla coming to India obviously would be a really big news, and Tesla, will have a huge market in terms of what is there to offer to India. But I also believe they'll be parallelly need to do a lot of work in terms of creating the infrastructure of creating the electric charging points and all. For example, in a place like Delhi, central Delhi is heavily already invested in terms of having all these charging points and electrical infrastructure, things like that. Some of our metropolises are having electric cars or electric cabs already running. So it's a very great start in terms of what we are looking forward to. Now Tesla has been in that sense the bellwether for electric vehicles, but I also believe there are a huge number of Indian auto manufacturers, including our own Make in India home brand Tatas, which have successful models right there in the market itself, and obviously with time we're going to see a surge in electric vehicles as soon as the environmental infrastructure. And when I speak of environmental infrastructure, I am speaking of basically charging points. They are created. There are state governments as well as central governments who have already announced subsidies for buying these vehicles. For example, as far as I know, Delhi government would also come in with some sort of a subsidy, or maybe has already announced a subsidy in electric vehicles. So these would also motivate the shift from a petrol vehicle or a diesel vehicle to electric vehicle. So we are creating a new market which is, quite aggressively opening up. And if you look at, for example, the U.S. market, of how the U.S. markets have, reacted to Tesla coming in. Tesla, in terms of market valuation, is now, if you put Tesla's market valuation, it is almost the same as the top 7 manufacturers' market valuation put together, which includes Fords and Hondas of the world. So that's what Tesla and that's what electric vehicle as a brand can do, in terms of performance. I do believe a similar performance will be expected over here also by the electric vehicle manufacturers as a whole, not individual Tesla, because the Tesla cars at this point of time are going to come in at a bit of an expensive rate than what the Indian markets are normally catered to, but certainly a really good and great start. आइए अब चलते हैं कृषि क्षेत्र की ओर। सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ विपणन मौसम में 1,02,000 करोड़ रुपए से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ खरीद गतिविधियों में अब तक 72,46,000 किसानों को फायदा हुआ है। कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि विभिन्न राज्यों में 2020-21 मौसम में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। बयान में कहा गया है कि अब तक 541 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में की गई 429,20,000 मीट्रिक टन की खरीद की तुलना में 26.07% अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि इस मौसम में धान की कुल खरीद में पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का योगदान किया है, जो कुल खरीद का 37.47% है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना परिश्रमी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। योजना के 5 साल पूरे होने पर सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत कवरेज में वृद्धि किए जाने के साथ ही जोखिम को कम किया गया है, जिससे देश के करोड़ों किसानों को फायदा मिला है। आपसे जो रिलेटेड न्यूज है क्रॉप इंश्योरेंस की, उस पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये सरकार जो है वो एक रिफॉर्म्स ओरिएंटेड जो उनका अप्रोच है, उस संदर्भ में अगर हम जो 3 फार्म लॉज आए हैं, आप ब्रीफली बता सकते हैं कि क्या इन्हें इतना रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म क्यों माना जा रहा है? देखिए, अगर आप ओवरऑल फार्म लॉज के बारे में बात करें, इस वक्त अभी हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का तहत वो चर्चा का कुछ ज्यादा ही आंकड़े में भी सुर्खियों में भी है, तो मोटी तौर से अगर बहुत सिंपली मैं बताऊं, अगर इंटीग्रिटीज में ना जाऊं तो इट्स अ वेरी सिंसियर एफर्ट जहां पे शिफ्ट किया जा रहा है। एक ओवरऑल हम लोग मार्केट रिफॉर्म्स लिबरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इस फार्म बिल लॉज जो है ओवरऑल उसके ऊपर फोकस करते हुए एक किसानों को मैं मानता हूं एक नया दिशा दिखाएंगे, जहां पे किसान कहीं पे भी जाए, देश का कोई भी कोने में जाके अपना जो भी फसल, अपना जो भी है वो बेच सकता है। इस वक्त अगर आप देखें, 2-4 दिन पहले ही सुर्खियों में एक न्यूज आया हुआ था जहां पे कहा जा रहा था, मेरे ख्याल से कल का खबर था ये,
जहां पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ऊपर एक प्राइवेट सेक्टर के कंपनी ने कर्नाटका के एक फार्मर्स ग्रोअर के यूनियन के साथ उन्होंने एक पर्टिकुलर प्राइस डील सेट किया। तो इस तरह का चीजें होना बहुत जरूरी है आज का तारीख पे। और मैं मानता हूं कि सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो गवर्नमेंट अपना जो प्रोक्योरमेंट तो करता है वो तो है ही, लेकिन साथ में ये भी समझना जरूरी है कि मार्केट में जब प्राइस का उछाल होता है या गिरावट होता है तो किसानों को मजबूरन माल बेचना ना पड़े, और वो चाहे उसमें आप स्टोरेज करें, जहां पे स्टोरेज के बारे में भी बात किया जा रहा है, सही रूप से स्टोरेज हो, जहां पे सही वक्त पे सही दाम पे वो किसान अपना बेच पाए। तो ये सारे चीजों को ध्यान रखते हुए सरकार ने ये रिपील का जो भी लॉज लेके आया, जिसके ऊपर बेशक इस वक्त सरकार के साथ अलग अलग किसान यूनियंस का बातचीत भी चल रहा है, कुछ खबरें भी है साथ में, तो ये हमें समझना पड़ेगा। लेकिन इट्स इवॉल्विंग सिचुएशन। लेकिन मार्केट का अगर आप देखें, इट्स अ मेजर एग्रीगेट मार्केट रिफॉर्म, और इंडिया को जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, तो इस तरह का लॉस के दौरान मार्केट में और अच्छा किसानों के हाथ में अगर और मुआवजा पहुंचाया जाए, उनका जो सही रूप सही दर है, हर साल कोई ना कोई फसल के ऊपर एक चर्चा होता है, आपको भी पता होगा सोनू, जहां पे बताया जा रहा है कि किसान ने 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया का भाव में कभी प्याज बेच रहा है, कभी टमाटर बेच रहा है, कभी आलू उन्होंने हाईवे में फेंकना का मजबूरी हुआ है। तो इस तरह का स्थिति कम हो या आगे ना है, तो इस तरह का स्थिति चाहे दोबारा रिपीट ना हो, तो इस तरह का ध्यान अगर अलग से ना हो, तो नीतिगत रूप से ये जो सरकार का प्रयास रहा, मैं मानता हूं कि ये प्रयास आगे से साल, 2 साल, 3 साल के अंदर जाके किसानों को शायद पूरी तरह से पता रहेगा कि अगर उनको सही मूल्य में चीजें मिल रही, तो वहां पे एक किसान को जो हम इनकम बढ़ाने का बात हमेशा हर सरकार आके करते हैं जी, तो नीतिगत रूप से ये सपोर्ट बेशक थ्रू दिस फार्मूला ही मिलेगा। Let's have a look at some more news. US-based electric car maker Tesla has incorporated a fully owned subsidiary in Bengaluru as a first step to set up an R&D unit and a manufacturing plant for its electric vehicles in the country. Tesla has registered its 100% subsidiary as Tesla India Motors and Energy Private Limited, according to disclosures with the Ministry of Corporate Affairs. And now moving on to the oil market, global crude oil prices stood firm today even as industry data showed a bigger than expected drop in US crude inventories. So the Brent crude future shed 4 cents to trade at $56.54 a barrel. But US crude futures gained 3 cents to $53.24 a barrel. Crude stocks in the US dropped by 5.8 million barrels last week to around 84.5 million barrels. Data from the American Petroleum Institute API showed late yesterday. Jayant, very briefly, the Saudi Arabia unilateral cuts on output have clearly raised prices of crude oil globally. Will Saudi Arabia continue to do so as they have promised February to March as well? And what does this mean for shale oil production and import costs for India when it comes to crude oil? Well, I typically believe the price of crude oil Brent would, remain between the 50 to 60 at large as of now. There are 2 reasons for that. While the global economy is gradually picking up, the long-term view of oil in terms of production would still remain at a stable stage at this point of time. जयंतो, अब हमें कीमती धातुओं की ओर चलना होगा, समय बहुत कम रह गया है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 108 रुपए सस्ता होकर 48,877 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। हालांकि चांदी 144 रुपए महंगी होकर 65,351 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $1,857 प्रति आउंस पर था। चांदी बिना किसी खास बदलाव के $25.48 प्रति आउंस पर थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जयंतो। शुक्रिया। And before we close, a reminder of the headlines erasing all its early gains. Sensex loses 25 points, but Nifty gains 1 point. Rupee strengthens 10 paise against the US dollar. In corporate results, Infosys reports 16.8% growth in its quarterly consolidated net profit. Wipro's consolidated net profit jumps 20.8%, and 72.5 lakh farmers benefit so far with MSP value of over 1 lakh and 2,000 crore rupees in the Kharif crop procurement season. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra, Mantra. Market Mantra.